Welcome back to another video guys, and in this video we are going to discuss what are data types in Java. So let's start this video. So data types in Java are different of size and different of circumstances, which are stored in a variable that is made as per the convenience and circumstances to cover all the test cases. सो बेसिकली डेटा टाइप्स होते क्या है, एक डिक्लेरेशन होती है कि इस वेरिएबल में इस टाइप का डेटा स्टोर किया जाएगा एंड उस पर इस टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं. लाइक इफ इट इज इंट टाइप, सो वी कैन परफॉर्म एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड mathematical operations we can perform on that. And if it is of string type, so we can perform concatenation operation and such that. So it is the definition of data types. And mainly two categories में divide करते हैं data types को. First is primitive and the another is non primitive. प्रिमिटिव में हमारे पास आते हैं boolean, character, int, short, byte, long, float and double. And under non primitive we have string, arrays and it is many more objects we can count under that. So data types in Java का ये ग्राफ है. प्रिमिटिव को हम बुलियन टाइप एंड न्यूमरिक टाइप में डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं. एंड बुलियन टाइप में बुलियन आया हमारे पास, एंड न्यूमरिक टाइप को फर्दर हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कैरेक्टर वैल्यूज़ एंड इंटीग्रल वैल्यूज़. एंड कैरेक्टर में हमारे पास ओनली कैरेक्टर है. इंटीग्रल वैल्यू में दो टाइप की वैल्यू हो सकती है. इफ़ इट इज़ ऑफ पॉइंट टाइप, सो वी कैन कंसिडर अंडर floating point, so we have float and double. And if it is integer type, so we have byte, short, int and long. They are of integer type but different in sizes. And non primitive में we have string, arrays and objects and many more. Okay, so in primitive data types, they are only single values and no special capabilities. Like we cannot perform any method operation with the help of that, because they contain a value in that, not a reference of anything. So in non-primitive they all contain the reference of data types, so we can perform operations with the help of that, because they the whole data types are declared in somewhere in a class, and all the helping methods are also declared in that class, so we can perform operations with the help of method and access those methods. We have that non-primitive data types or reference data types variables. So sizes of data types are like boolean is of 1 bit, which only has two values, false and true, and the default value of boolean type is false. And byte is of 8 bits, which has the minimum value of -128 to 127, and the default value is 0. Short is of 16 bits, which has minimum value -32,768 to 32,767, and the default value of short is 0. Character is of 16 bits, which has the minimum value of 0 and a maximum value of 65,535, and the default value of the character is /u/444 okay. And int is of 32 bits, which has the minimum value of -2 into 10 to the power 31 up to 2 into 10 to the power 31 minus 1, and it has the default value 0. Long 64 bits, -2 to the power 63 up to 2 to the power 63 minus 1, default value is 0. And float and doubles are also are of 32 bits and 64 bits, and default values are 0.0 and 0.0. So let's understand with the help of an practical example. Okay, so now we are creating a file. First we have to open notepad data types .java नाम से हम फाइल क्रिएट कर लेंगे, एंड क्लास दे देंगे उसे, क्लास data types. Okay, let me zoom it. Okay, now we are creating main method. इस मेन मेथड में हम हमारे सारे डेटा टाइप्स को पहले डिक्लेयर करेंगे, देन उसे
प्रिंट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद बुलियन. बुलियन bout इज इक्वल्स टू ट्रू असाइन कर देते हैं उसे. एंड बाइट बाइट बी, हम बाइट को बी दे देते हैं एंड उसकी वैल्यू रखते हैं -128 विच इज़ द लोएस्ट वैल्यू. एंड बाइट के बाद आता है हमारे पास शॉर्ट. शॉर्ट तो कह लिए एस इज सफिशेंट, तो शॉर्ट का एस दे देते हैं एंड शॉर्ट की वैल्यू होती है -32,768 से. ओके, नाउ इंट में हमें कोई ज़रूरत नहीं है सारी मैक्सिमम मिनिमम की. सो 43 असाइन करके देख लेते हैं इंट में. एंड रिमेनिंग आर कैरेक्टर में हम ए असाइन कर लेते हैं. एंड लॉन्ग एल, एंड लॉन्ग में हम लॉन्ग वैल्यूज़ ले लेते हैं. फ्लोट में हम ले लेते हैं 34 एंड डबल g is equals to right. So I think we are creating all our 3. Okay, so we are creating all the data type, primitive data types variables. Now we can see with the help of system. Println, first we are printing boolean and I copy this. I think it's sufficient. First we printing boolean, then byte, then what is short integer and इंटीजर के बाद हमारे पास है कैरेक्टर. इंटीजर के बाद है कैरेक्टर के बाद लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल. वी हैव लॉन्ग, फ्लोट and after that we have double. So let's compile this code. To compile this code we are opening a command prompt in this folder. So type cmd, then after java c for compilation and data types.java. फाइल नेम देंगे incompatible error. So it is the error, and to solve this error we have to declare float with a f in the last, so it knows that it is a float type value. Then again we try to compile it. Now it's completely fine, and then we run our code, which is data types.class, and here is the value we are getting. It is a float, it is a double type, it is a float, and long, character, integer, short, byte and boolean. So we are printing those values in that, and in the next lecture we see how we can promote the type of that data types and what are the non-primitive data types. So thank you for watching this video.